Okay, sir. So let's see pressure testing of CO2 flooding system. So we have the pipe and area Yeah, material yeah, and the yeah. testing. So low pressure suction, branch pipe nozzles, and Seamless nozzle. galvanized seamless magnetized steels. 7 bar. We are doing the air blow test, and medium is Medium problem. master valve and all these things are there. Pipe control. Mm, Actually, they yes, the nozzles should be clear. clear. So now, can you show me the this CO2 line diagram? I will Yes, just sir. 1 minute. I will just finish read out this maintenance. So ये over हो जाएगा. Then by the time this when when time comes or when you have to inject actual in actual cases when you have to actual fire when you have to inject the CO2, that time the some if you have not maintained the system or if you have not tested prior before that and routinely, then maybe that last moment the nozzle will not open and CO2 will not release. So to ensure that in the CO2 pipeline system in the inside the CO2 room, there's a in the main manifold the blanking arrangement is given. I think in the previous picture it is shown that blank pipeline blank arrangement. Yes, sir, it was there. हाँ, तो वो ब्लैंक इस तरह से होता है कि एक तरफ ओपन है, ब्लैंक फ्लैंज इज उसका शेप इस तरह से होता है, एक तरफ होल है और दूसरी तरफ ब्लैंक है, तो वो इट इज ये हमेशा उसमें ब्लैंक जो अरेंजमेंट है उसमें हमेशा वो फिट रहता है। तो जिस समय भी हमें उसको मेंटेनेंस करना है, मेंटेनेंस मतलब आपको प्रेशर लाइन चेक करने हैं, नोजल्स का क्लैरिटी चेक करनी है प्रेशर देके, तो उस समय उस ब्लैंक को हम लोग एक्चुअल में ब्लैंक कर देंगे, वो फ्लैंज को टर्न करके वो लाइन ब्लैंक करेंगे। ब्लैंक करने का आइडिया इसलिए है कि वो जिस तरफ CO2 सिलेंडर्स हैं वो लाइन ब्लैंक हो जाना चाहिए। इफ आप वो पिक्चर निकालेंगे लाइन डायग्राम, जरा मैं आपको तो उसमें समझा दूं थोड़ा। इसमें इस जो इंजन रूम के लिए जो मैनिफोल्ड जा रहा है, इस द मैनिफोल्ड व्हिच इज लीडिंग टू द इंजन रूम, देयर वन अरेंजमेंट इज गिवन, द प्रेशर गेज है, उसके बाद में यहाँ ब्लैंक है, ब्लैंक यहाँ दिखाया नहीं इस वाली पिक्चर, पिछले वाले दिखाया था, हाँ इसी में जहाँ एरो आप दिखा रहे हैं उधर ही ब्लैंक फ्लैंज का अरेंजमेंट है, मतलब वो लाइन को हम cylinder head cylinder जो black cylinder series of cylinders you are seeing, that part is that side is blank. So if you are blowing air in this side, then air by mistake the air should not go down to the cylinder and by mistake the सिलेंडर जो हेड के ऊपर जो पंचर वाल है वो ऑपरेट ना हो, उसकी सेफ्टी के लिए आप इसको ब्लैंक कर देते हैं, मतलब यू आइसोलेट द सिलेंडर जो गैंग उस साइड को फ्रॉम द इंजन रूम मैनिफोल्ड के साइड में। नाउ बिफोर आफ्टर ब्लैंकिंग, the next step is onto the cylinders, CO2 cylinders, there are locking pins arrangement is there, क्योंकि पंचर वाल तो this is a floating system, पंचर वाल which is mounted on the CO2 cylinder head, that is all the floating arrangement, it operates with the pressure. The moment the CO2 पे कॉमन मैनिफोल्ड में जो प्रेशर आता है, मैं पहले बता चुका हूँ, जो प्रेशर आता है वो एक पायलट लाइन से उस पिस्टन और प्लंजर पिस्टन और पंचरिंग सिस्टम में जाके उस वाल को प्रेशर से पंचर कर देता है। तो वो ना हो, टू प्रिवेंट दैट, हम लोग इस लाइन को ब्लैंक करते हैं ताकि कोई बाय मिस्टेक प्रेशराइज एयर जाके उसको एक्टिवेट ना कर दे। तो उसके लिए दूसरा हमको सेफ्टी क्या लेना है कि देयर इज अ लॉकिंग पिन अरेंजमेंट सो दैट द फ्लोटिंग पिन बाय एनी मीन डज नॉट मूव with any pressure or by mistake,
तो उसको लॉकिंग पिन रहते हैं, मतलब CO2 रूम के अंदर, तो लॉकिंग पिन का लॉक करके उसको सिलेंडर हेड के इसके सिलेंडर के जो हेड माउंटिंग में उसको हम प्लंजर वाल को लॉक कर देते हैं, प्लंजर वाल जो स्पिंडल एलिमेंट्स को लॉक कर देते हैं। तो ये नेक्स्ट स्टेप हो गया, पहला हमने ब्लैंक किया, उसके बाद में उसको पहले लॉक कर दो, पहले लॉक करके उसको ब्लैंक किया, ब्लैंक करने के बाद में देन before the blank and towards the engine room side there is a connection given to connect the air hose, connect the air hose। वो compressed air का एक लाइन रहता है जो इंजन रूम से कंप्रेसर से आता है, रिसीवर से, वो लाइन is already installed inside the CO2 room। So from there there is a hose arrangement is there, with that hose arrangement we connect this manifold, और जो इंजन रूम साइड में जाता है उसको हम कनेक्ट करते हैं। एंड before connecting that, practically you have to check the any moisture or anything is content should not be there in the air, that is very important actually। ये theoretically थोड़ा कहीं explain नहीं होता है, लेकिन practically we have faced this problem। if air contains lot of water, say suppose air receiver को duty engineer या कोई oiler उसको बार बार drain नहीं करता है, और उसको हमने हवा को उसको खोल दिया, तो उसके साथ में बहुत सारा पानी का क्वांटिटी भी यदि एयर के साथ में आता है तो दैट इज वेरी डेंजरस। वो आपके सारे नोजल को और ब्लो करने की जगह में उल्टा उसके अंदर चोक कर सकता है, उसको पानी का कंटेंट अंदर जा सकता है, मॉइस्चर का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू मेक श्योर दैट फॉर थोड़े समय के लिए उसको हवा को खोल के यू हैव टू मेक श्योर दैट ड्राई एयर कम्स आउट। When dry air comes out, तो उसके बाद में आपने होस को कनेक्ट करके then you start blowing and blowing in the sense, और blowing करने के पहले आपको जैसे बैलून टाइप का एक जो है वो सब उसमें आपके जितने भी नोजल्स हैं इंजन रूम में उसमें आप बांध देते हैं या कुछ ऐसा अरेंजमेंट करते हैं so that when the air is blown that वो बैलून टाइप का जो फूल जाए, या उसको आप प्रैक्टिकली आप हाथ से देख सके कि हाँ हवा आ रहा है कि नहीं। तो each nodules located in the engine rooms has to be verified that air is blowing through those nodules, that is very important। और कोई भी जैसे डस्ट है या कुछ भी ऐसी चीज है वो उसमें से निकलनी चाहिए। तो ये हमारा एक प्रेशर टेस्ट अरेंजमेंट होना चाहिए। और दूसरा कि और ये तो एक हमारा रूटीन चेकअप है कि लाइन को हमको ब्लो करना है, और And we have to also stencil that line blown through tested as per this is very important to check in the नोजल्स की inspections. क्लैरिटी को चेकअप करना रूम के लिए हो गया। और कार्गो होल्ड के लिए भी कार्गो होल्ड नोजल्स भी हमको चेक करने पड़ते हैं। कार्गो होल्ड Yeah. नोजल्स की जो लोकेशंस है वो एक फॉरवर्ड में रहेगा, एक आफ्ट में रहेगा, एक मिडल में रहता है। तो कार्गो होल्ड के नोजल्स को भी आपको Blow in through. the same manner you have to same manner you have to check, you have Yeah. to blow through and check the air flowing through the nozzles and it is clear or not. This is the main actually And that also we have to stencil is checked in your routine, surveys and all. right? On so and so date. So that is the routine. Every 3 months or 2 months, 1 month you have to do it accordingly. And then after that, don't forget to remove those pins. After confirming that there is no air in the system, then again remove the blank and remove those pins, locking pins we have, which we inserted before here, doing this locking pressure pins for test। the CO2. वो CO2 जो सिलेंडर हेड माउंटिंग जो, हाँ यस, हाँ CO2 जो प्लंजर अरेंजमेंट है उसको निकाल के रखना जरूरी होता है, so that your system is ready for next use। And same way you have to check the pressure gauge also। pressure gauge की जो रीडिंग्स है, पैरामीटर सही दिखा रहा है कि नहीं, उसके लिए भी थोड़े समय के लिए वाल को बंद करके प्रेशर गेज भी चेक करना पड़ता है। एंड ओवर प्रेशर करके आइसोलेट करके आप यू कैन चेक द रिलीव वाल आल्सो इफ इट इज लिफ्टिंग और नॉट, दैट आल्सो यू कैन डू इट and let it done।
Okay, okay. relief. So relief valve we So can check by over pressurizing the line. by over pressurizing line, you can check. Over pressurizing in the in that particular area by closing this valve, and from one side if you release a pressure, but pressurizing मतलब इस तरह के नहीं कि जो स्प्रिंग उसका जो है वो फिर इनएक्टिव हो जाए, ऐसा नहीं, इतना इस एक्सटेंट तक नहीं, उसको इतना प्रेशर उसको देना चाहिए कि ताकि वो उसकी हम इंश्योर कर सके कि यस रिलीव वाल इज आल्सो फंक्शनिंग. This is That's the how test can the connection. that's how it is meant. And other thing is like you are in the CO2 room, you have to make sure that the CO2 room blowers are running or not, because blowers are also very important inside the CO2 room. If that to maintain the temperature inside the CO2 room, or you have to inspect any either any leakage is there or not. Then the precaution before entering the CO2 room, you have to start the blowers. Blowers means to purge out the any gases or any intoxicated things, gases inside the CO2 room before entering to the CO2 room. That also you have to make sure. So this is the general checking and general maintenance we have to carry out in CO2 room. Less maintenance requirements एक बार देख लेते हैं. So हाँ. fixed CO2 system should be kept in good working order and ready for immediate use. That is your SOLAS requirement. And for that, we have to do some maintenance and inspections as per ship's PMS and your SOLAS and flag state requirements. So monthly, we have to check all the alarms and the machinery trips, the door alarm, that is cabinet door, and quick closing alarms, flaps, skylights, ventilation fans, and trips to be tested. Then yearly, we have to general inspection of all the installation and pipes, there no leakage or this thing blow through and all. Then your 2 yearly, we have to verify that the CO2 contents by mechanical advantage lever, that is checking the weight, or you can check by ultrasonic liquid level measurement or radioactive liquid level measurement. So equipment for measuring CO2 content must be available on board ships. A maximum reduction of 5% in the CO2 content may be allowed, provided that CO2 quantity on board is not less than the required amount. So little bit extra quantity is there, so required quantity is there, and 5% reduction from the original is allowed. And blow through system with 6 to 7 bar air with plastic airbags at the nozzle ends is done 2 yearly. That I was concerned on that only point. हाँ सर. So वो जो प्लास्टिक का जो बैग बताया ना, that is actually fitted onto the nozzles. इंजन रूम जो nozzles होते हैं, तो 6 to 7 बार जैसे आपने एयर प्रेशर उसमें दिया, तो वो बैग expand होंगे, so you will come to know that these nodules are all clear. That is the way of, that is the procedure to test how whether nodules are clear or not. Okay. अच्छा, now one more thing is that कि आपने जैसे रूटीन बताया कि मतलब CO2 का विजुअल अलार्म चेक करना है और ये करना है, ये थ्योरेटिकल तो उन्होंने बोल दिया CO2 का अलार्म चेक करना है, लेकिन CO2 का अलार्म चेक करना से सपोज आपका 1 महीने में रूटीन आया और शिप स्टिल सेलिंग, तो CO2 अलार्म को चेक करने के लिए आपको कैबिनेट डोर खोलना पड़ेगा. यदि आपने कैबिनेट डोर खोला तो वो कैबिनेट डोर यदि आपने खोला तो वो आपका जो ब्लोअर को भी ऑफ कर देगा एंड इट माइट स्टॉप द इंजन, सब एवरीथिंग मे कम टू द हॉल्ट. तो उसके लिए उसका एक अल्टरनेट अरेंजमेंट दिया रहता है. CO2 कैबिनेट के बाहर ही एक सोलेनॉइड वाल्व को पुश बटन दिया रहता है some से only just to check the visual audio alarm. You have to push that button and test it whether it is alarm is working or not without disturbing any other routine, the ventilator fan or anything. Nothing will stop, only the audio alarm will ring and you will come to know that alarm is functioning. Correct, sir.
हाँ, So we can वो check the alarm with the push button. पुश बटन विदाउट obstructing any operation of the engine. Correct. Then we have 5 yearly test. So servo cylinders and any remote control stop valves to be tested by opening one pilot cylinder. So every 5 yearly your pilot cylinder will be tested, and then the main CO2 bottles, what you call, must be uncoupled for this purpose. So of course for pilot cylinder, if we test and main CO2 bottles will also release. So for that we have to make sure that this your CO2 bottles are uncoupled. Then spring loaded relief valve will be checked of up to tested at 180 bars. Yeah. The checking of high pressure alarms which operate with gas pressure. Then the section of CO2 which can be shut off must be tested with air at 25 bars. So this is basically all things done by shore, but it's when we are So doing actually, shore. to gauge this cylinder weight, CO2 cylinder weight, we from the shore people only, if it is the schedule is there, then we will call the team from ashore and ultrasonic जो सेंसर है उससे उसकी वेट को और उसके जो लेवल को चेक करते हैं वो लोग आके CO2 के सिलेंडर्स का Correct, sir. इन Then also there is hydrostatic, some pressure test that we will be sharing. So 10 yearly is, of course, in 10 yearly, the first yearly, second yearly, and 5 yearly things will be done. And also CO2 bottles will be inspected internally. Siphon tube yes. or dip tube will be checked. Cylinders will be pressure tested at 250 bars. If permanent change in volume is observed, those cylinders to be discarded. After 20 years of installation of CO2 flooding system, these tests to be carried out every 5 years thereafter. So these are actually SOLAS requirements. Your flag state might have some more uh, or less frequency. So of course, flag state and cannot have less than this. They can have some more requirements within. Yeah. Then 15 years and 5 years thereafter, pressure test of high pressure pipes, stop valves to the engine room and pump room, purifier room, etc. at 190 bar, medium pressure pipes at 80 bars, and low pressure pipes at 7 bar. After hydraulic pressure testing, lines to be blown through by dry air. Service chart sample used by marine engineers for CO2 flooding system on ships is shown. So these are the things what they will check when they are doing servicing. So that will not see in much detail, just overlook. Release the controls and distribution valves and so that is about the maintenance. Yeah, So muster जैसा सर ने बताया, basically head main count. things, basically everybody should be out because otherwise if for any person is there, so he will get suffocated. So muster and take head count. These procedures will be there on your ship and on this system also. Master will take the decision depending on the situation. If total CO2 flooding of engine room is to be done, master will consult with chief engineer. Nearest coast guard has to be informed, or your if you are in port control and all. So all authorities, company have to be informed. Proper sealing, all ventilation, blowers, everything has to be shut. Otherwise, anyway, CO2 can reignite because of no cooling, and if ventilation is not there, then your full system will get waste, and you have only one chance. So this is your last chance. And make sure emergency generator is running and on load, because your other auxiliary engine and other things will get stopped. No, 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 no. Emergency generator is specially why it is required is because from emergency generator the minimum connection is given actually. So that is for emergency fire pump और स्टेयरिंग मोटर एक स्टेयरिंग मोटर में होता है तो ये चीजें जो है और एक एक ब्लोअर में होते हैं तो ये इमरजेंसी फायर में फायर पंप में कनेक्शन देने का मतलब है कि बाउंड्री कूलिंग और फायर उसके लिए जो इन केस उसके लिए रिक्वायरमेंट होता है इमरजेंसी जनरेटर हैज टू बी in running condition when this such kind of fire occurs in the engine room.
Okay, then all access doors, vent flaps, blower flaps, skylight hatches, fire which is flaps have to fire be closed. Quick closing closed, valves for valve fuel to be supply closed. to be closed. Mm, Emergency stops, lube oil pumps, all fuel oil pumps mm. For have to these, be a actually, you have a group switches, yeah. group switches. Yeah. As I told you, as ES1, ES2, they Yes, will yes. take care of all these topics. All machinery in engine room to be stopped. All Mm. ensure all personnel vacated in engine room. CO2 must be released by competent engineer. Break the glass. Take the CO2 release cabinet from key box. Using local CO2 cabinet is preferred. Open the release cabinet. Audio-visual alarms will be sounded. Ventilation blowers will trip. Will activate. In CO2 release cabinet, open pilot cylinder valve first. Open valve 1 for master valve first, then open the valve 2 for CO2 release mechanism. CO2 will be released after 60 to 90 seconds of time delay. Now the system pressure can be checked from the pressure gauge on the manifold. If CO2 is not released, then following emergency release procedure, open master valve manually and open each CO2 main bottle by manual actuation lever. So this we have discussed. CO2 is the final this thing. Some safety precautions. How you So will how know to CO2 is released. So there will be a big sound when CO2 is released and gas escaping the CO2 protected bottles will be space. filtered. Okay. CO2 bottles will be filled cold, as we know. Yeah. It's like dry ice and something. Visual inspection of the operation of pressure operated cylinders can also be carried. Probability never bring play bear flame such as this thing. And my brake again explosion coverage. Now I want to add one more point in it. That before also I explained you. After doing the boundary cooling and after doing the boundary cooling means CO2 system को flood करके after making sure that there's no fire inside to ensure actually you have to go right down to the engine bottom platform. If number 5 hatch is not loaded, or in some of the ship there's a wide space between the number 5 hold and the engine room bulkhead toward the hold, then that wide space or the space you have to go down and drill on the bottom, make a hole. So access to make access from the engine room bottom to the hold or the other side, and ensure that if the still smoke is coming or still if it is some there's no trace of fire, then only you have to be sure that there is no fire inside the engine room, and then you can make a access from the accommodation door or somewhere you can enter into the engine room. So that is also very important actually. Go into the engine room. तो इंजन रूम के लिए जो मास्टर वाल्व है उसमें एक एंड में लिमिट स्विच दिया हुआ है, तो वो लिमिट स्विच ऑपरेट होगा तो आपको पता चल जाएगा कि वाल्व खुला हुआ है, then only the gas will release. So by visual indication, we can know that master valve is open by Master valve is this. open, the CO2 is releasing. Okay. So basically, precautions before entering CO2 system is basically what all you are doing, same like before entering any enclosed space or something. Now, And also, as sir told, that fire has to be extinguished, so those things you will check. And now coming to that point, he raised a very good question. How to ensure that the valve is opened or not? Yes, that time delay and this operation of valve all are interconnected actually. What happens is when we go to the main control station, the control panel where small two pilot cylinders you saw, from there when chief engineer opens that valve, the CO2 is released, and there you must have seen the two knobs. One is going to the distributor valve, मेन इंजन के लिए जो डिस्ट्रीब्यूटिंग वाल है, मेन मास्टर वाल, और दूसरा जो है वो अपना सिलेंडर पंचरिंग के लिए जा रहा है, जो अपना मेन सिलेंडर जो गैंग है उसको पंचर करने जा रहा है. तो वो तो ये मास्टर वाल जो है, जो डिस्ट्रीब्यूटिव वाल है, उसमें लिमिट स्विच लगा हुआ है, मैंने जैसे बताया. वो जैसे लिमिट स्विच ऑपरेट होगा, then it will that signal will go to the delay arrangement. You understood?
वो उसको वो डिले अरेंजमेंट में जाएगा, जो टाइम डिले अरेंजमेंट आएगा, और यदि ये स्विच ऑपरेट जब तक नहीं होगा उसको वो क्लियर सिग्नल देगा ही नहीं. You understood? Unless this distributor or master valve is opened by actuating that limit switch, this if limit switch is not operated or this valve is not open, this will not give a clear signal to this time delay device, and it will not let the CO2 flood into this main manifold and open the gang valve. It will not operate only. So that's how this safety is given actually. अभी आपका वो वाल खुला ही नहीं, तो आपका इसको पंचर करके कोई फायदा नहीं है ना. तो उसके लिए इसको जब तक वो वाल खुला नहीं, it will not make sure, it will not give a signal to this delay arrangement and open the valve. So is it related to evacuation time? नहीं 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 नहीं, ये इवैक्यूएशन की टाइम की बात नहीं, मैं ऑपरेशन की बात कर रहा हूँ. इवैक्यूएशन तो आपने जो मास्टर काउंट हार्ड काउंटिंग की, उसके बाद में चीफ इंजीनियर ने जब रिलीज करना है कर रहा है उसकी बात कर रहा हूँ. जब जैसे उसने जो पायलट कैबिनेट डोर खोला और उसको रिलीज किया, तो पहला जो ऑपरेशन उसका ये होगा कि ये मास्टर वाल, ये वाला No, मास्टर sir. वाल जो In है case दिस, of accidental release. इन केस ऑफ एक्सीडेंटल रिलीज में तो देन you cannot do anything. एक्सीडेंटल रिलीज में up to what extent एक्सीडेंटल रिलीज, मतलब जैसे अभी आपके सर ने बताया, जितेंद्र सर ने जो बताया कि भाई उन्होंने कैबिनेट डोर खोल दिया तो अलार्म आ गए और ये जो ब्लोअर बंद हुआ, तो उससे कुछ नहीं होगा. उसमें ज्यादा ये नुकसान होगा कि इंजन बंद हो जाएगा, देन यू कैन रीस्टार्ट इट. लेकिन आपने जैसे वो वाल, पायलट का वाल जो खोल दिया, दो जो छोटे छोटे वाल दिखाए वो खोल दिया, तो देन CO2 इज बाउंड टू रिलीज. CO2 रिलीज होगा ही होगा, फिर वो यू कैन नॉट स्टॉप एनीथिंग. तो दैट एक्सीडेंटल जो जो ऑपरेशन हुआ है वो डेंजरस है. वो तो फिर आपका CO2 रिलीज होगा ही होगा, चाहे मैंने किया, चाहे आपने किया, चाहे किसी ने, चीफ इंजीनियर ने किया, किसी ने भी किया, वो तो होना ही है. तो इसमें एक्सीडेंट, दैट्स व्हाई इट इज केप्ट लॉक्ड. दैट कैबिनेट डोर इज वेरी इंपॉर्टेंट. इट इज केप्ट लॉक्ड and that key is there inside the outside this thing. For safety reason only that is done. मैं तो उस केस में जो है ये सोलेनॉइड वाल्व नहीं खुलेगा और ये आपका CO2 रिलीज नहीं होगा. आई वाज एक्सप्लेनिंग दैट पार्ट. Yeah, once master valve is open, then CO2 will release because the bottles will release. In case Yes. because of problem with the pin or this plunger system, CO2 bottles are not released, then we will have to release them manually. That is the Manually. luck system. Correct. But Yes. practically it is designed that once master valve is open, so CO2 system will not release. Or in next option of emergency or accidental release can be that somebody opened the pilot valve by mistake. So pilot valve is opened, but if as I told your master valve is not opened, then time delay signal will not be there and CO2 will not be released. Right. Yeah, that also. If you are Yes. flooding from the CO2 रूम सिस्टम, आपका समझो कि बाय द वे आपका रिमोट काम नहीं कर रहा है, या कोई ऐसा कोई कारण हो गया कि कोई प्रॉब्लम है, तो आप CO2 रूम खोलकर अंदर से अंदर जाकर भी आप मैनुअली ऑपरेट कर सकते हैं. एवरीथिंग कैन बी. उधर भी एक रिमोट आपका कंट्रोल स्टेशन दिया हुआ, दो पायलट वाल के बॉटल के अरेंजमेंट वहां पर भी हैं, पर डिस्पाइट दैट यू कैन मैनुअली ऑपरेट ऑल दी सिलेंडर्स बाय पंचरिंग. मैनुअली आप पुल करके भी उसको कर सकते हैं, और वो पहले उसको डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व जो है उसको मैनुअली भी आप खोल सकते हैं. मैनुअल अरेंजमेंट कैन बी डन. सर ये जो पायलट सिलेंडर्स के से जो CO2 निकलता है आफ्टर रीचिंग CO2 हेड असेंबली, what happens to it after that? Do it get flooded with main system? नहीं, CO2 जो होता है पंचर वाल्व. Yes sir, तो ये after operating puncture valve, what happens to it? पंचर वाल्व, देन द CO2 गेट्स इनटू द कॉमन मैनिफोल्ड. कॉमन मैनिफोल्ड में जो मैनिफोल्ड ऊपर से सभी में जा रहा है उसमें जाता है, और एक लाइन जो पायलट लाइन है वो दूसरे में सीरीज में लगा हुआ है. तो एक सिलेंडर जैसे ही उसमें से गैस निकला, तो वो एक जो पायलट जो पाइप्स हैं, आपने देखा होगा, यू स्मॉल स्मॉल जो मतलब 6 mm का जो ट्यूब टाइप का कॉपर ट्यूब का पाइप है, एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं. तो जैसे एक से खुला
वो एक तो वो कॉमन मैनिफोल्ड में जाएगा ही जाएगा, उसके अलावा पायलट जो पाइप है उसमें भी जाके दूसरे सिलेंडर के को प्लंजर अरेंजमेंट को पंचर करेगा, या तीसरे को, चौथे को, इस तरह से पंचर करता ही चला जाएगा, सीरीज में पंचर होते चले जाएंगे, और दैट ऑल द होल गैस विल गेट इनटू द कॉमन मैनिफोल्ड. That's how the arrangement is. This is all done with the puncture wall arrangement only. वो जो कि जो CO2 का जो 6 kg का प्रेशर है गैस का, वो ऑपरेट करता है इसको पंचर अरेंजमेंट को, जो पंचर अरेंजमेंट को. बेसिकली लाइक अ एक्सटिंग्विशर, यू हैव टू एक्सटिंग्विशर के टॉप पे जैसे उसको पिन को दबाना पड़ता है. यस, हाँ, यस, बट ये यहाँ अपना पे ऑटोमेटिक ये है प्रेशर एक्सटिंग्विशर से. को, इतना बड़ा बॉटल को हम जाके प्रैक्टिकली दबा भी नहीं सकते. मींस इमरजेंसी नहीं अगर नहीं ऑपरेट नहीं नहीं कर नहीं, रहा है आप, तो दबाते हैं. हाँ, नहीं ये अदरवाइज आप तो, नहीं आप मैनुअली दबा सकते हैं, मैनुअली दबा सकते हैं. यदि वही मैंने कहा ना, यदि मानो ये ऑटोमेटिक सिस्टम नहीं काम कर रहा है, तो आप मैनुअली भी एक को दबाएंगे तो सब अपने आप खुल जाएगा. करेक्ट. मैनुअली कर बट सकते अगर हमें रिमोट लोकेशन से करना है तो ये पायलट वॉल्व है, पायलट वॉल्व में CO2 प्रेशर है. ये हैं. हाँ, प्रेशर बस यहाँ से जाएगा और ये आएगा, इस लाइन को इस तरीके से सेटिंग है कि ये प्रेशर जो बस है ये इसको पंचर कर देगा. पंचर तो पंचर कर देगा. यस, CO2 यस, लाइन में अपने आप रिलीज खुल हो जाएगा. जाएगा, ये CO2 लाइन में आके ये सब सब इंजन में करेक्ट, चला जाएगा. सर करेक्ट, मेरे को करेक्ट. एक चीज समझ, सिलेंडर जो ये जो आपने देखा भी रेड लाइन CO2, बनाई है ना मैंने, ये एक हाँ कॉपर हाँ की ये, लाइन है. ये हाँ सारे हाँ, ये सारे लाइन, प्लंजर्स को कनेक्ट कर रही है. हाँ, तो एक इंटरकनेक्टेड ऑपरेट होगा पाइप्स है, तो पाइप्स एक है, का प्रेशर दूसरी लाइन में जाएगा, दूसरे का प्रेशर जाएगा. तीसरी लाइन में जाएगा, यस, यस, सबको यस. नहीं खोलता सर, जाएगा. दैट इज ओनली फॉर सर पायलट सिलेंडर. अगर हम एक ऑपरेट करते हैं, सपोज कि हम लोग कार्गो होल्ड के लिए ऑपरेट कर रहे हैं, तो फिर ये रॉन्ग है ना? नहीं तो कार्गो होल्ड के लिए पायलट सिलेंडर होता ही नहीं है ना, उसके लिए तो फिर मैनुअल काले, रिलीज होता है ना. हाँ, मैनुअल रिलीज होता है, सो मैनुअली हाँ आपको ही सिलेंडर खोलने पड़ते हैं. हाँ, बट सर आपने बोला ना मैनुअली हम लोग रिलीज करेंगे तो सब खुल जाएगा. उस इसमें नहीं, इसमें मैं एक चीज आगे की होती है जो ये बड़े यहाँ पे साइज दिखा है, रिलीज कैबिनेट इन CO2 room and हाँ, release cabinet in fire station. So we operate from fire यस, station, यस, then they will open the pilot wall in CO2 room and then this यस, will activate the यस, valves and यस, open यस, it. यस, दैट देन दो पायलट सिलेंडर के जो गैस जो रिलीज होता है, वो देन इट गोज टू दी कॉमन manifold as well as those small tubes also, and it keep puncturing one by one all the cylinders in group, and that gas keeps releasing to the common manifold. That's how it happens. It is all pressure actuated. ठीक है, What will चलिए you फिर do for a cargo hold fire? So remote detector fitted at the CO2 room can detect smoke on concerned cargo space. This operation must be done by master's order. After ensuring no person is left, seal off the cargo space, closing ventilation, fire damper and hatch cover. Operate three-way valve for the concerned hold. So yes, every hold will have a separate valve that we will show. And three-way valve manually open all the required CO2 bottles. bottles. Yes, So that that you all can see again how is depends. the connection. Yeah, actually that depends how much fire of fire. If you think that this much cylinders are sufficient, you will manually keep releasing one by one the cylinders, like that it is. Yeah, so your For CO2 cargo. bottles are at 52 bar and there is a bursting disc fitted. There is a is temperature and For safety, that is for recharge is safety. 5% loss and hydraulically tested up to 228 bars. And all those we saw the requirements. That is Then general inspection of CO2 room, emergency light, exhaust fan, all bottles, overall conditions, physical conditions, wires, CO2 alarms, CO2 room key in position, operating instructions are there, inspection recorded in logbook, Saturday, routine check. And for survey, we saw all the testing requirements, 2 yearly, 5 yearly. And